Hello everyone, I welcome you to my channel Geo for Geography and myself Akshay. सो गाइस देखो आज मैं बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ जो बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा वैसे। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि विच न्यूज़पेपर शुड वी फॉलो, है ना, शुड आई फॉलो फॉर द पर्पज ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है, जनरली क्या होता है, प्रीलिम्स की डिमांड कुछ और है, मेंस की डिमांड कुछ और है, पर्सनालिटी टेस्ट में और डिमांड है। तो ऐसे केस में ना the student many of the time because of their whatever there are number of factors actually कि जिस वजह से स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना कंफ्यूज होते हैं कि what they should follow then accordingly, है ना, which newspaper they should follow, the Hindu या the Indian Express। ना ये गाइस देखो, बहुत मेरे पास इस चीज़ का वैसे बहुत सिंपल सा आंसर है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो वॉच इट टिल द एंड, यू विल फाइंड कि बहुत क्रिप्स लैंग्वेज में आपको एक क्लियर कंक्लूजन भी मिल जाएगा। सी वैसे तो इंडिया में यू विल फाइंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ न्यूज़ पेपर, है ना, कि जैसे यू विल फाइंड कि टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, या रीजनल लोकल लैंग्वेजेस के पेपर्स है, बहुत सारे देर आर नंबर ऑफ न्यूज़ पेपर दोज आर एक्चुअली इन इंडिया एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल। बट अब देखो, जब से आप इनमें से इतने दो ही न्यूज़पेपर क्यों फॉलो करते हो या न्यूज़पेपर में क्यों कंफ्यूज हो, बस ये अगर चीज़, अगर इफ़ यू हैव दैट क्लियरिटी ओवर, you will find your answer would easily, you can have a right conclusion even for this two newspaper as well. See, the very first thing, that why you made only this two separate from the others, from the rest, there are some reasons, there are some factors those are working for this। बस वही factors हम तो और फिर इस newspapers पे भी apply करेंगे। you will have at least, not I'm telling you 100%, but you will have a kind of clarity over कि फिर which type of newspaper you are supposed to and for what purpose as well। देखो, now what factors we need to consider while choosing the newspaper, like between this two, the Hindu या इंडियन एक्सप्रेस, अगर हम देखेंगे तो इस केस में हमको क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए। अब देखो, अभी करने के लिए डू रिमेंबर दो चीज़ों में यू शुड हैव ए मास्टरी ओवर, आई वुड से रादर, राइट, मास्टरी आई एम टॉकिंग अबाउट। द वन इज syllabus। Syllabus you should have on tip of your tongue always. You should remember the syllabus of prelims and syllabus of mains। I'm talking about the main syllabus because prelims का syllabus ये तो बहुत short and crisp, right, and वो self explanatory नहीं, but mains you will find। and the second is the right understanding about the PYQs। तो ये दो चीज़ अगर होगी तो you will find your the best newspaper as well। now देखो, अब रिलीवेंस टू द एग्जामिनेशन, दैट शुड बी आवर फर्स्ट पॉइंट, कौन सा न्यूज़पेपर हमें ज़्यादा रिलीवेंट लग रहा है, राइट, वेदर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। देखो, अब रिलीवेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, यू विल फाइंड इक्वली द newspaper, both the Hindu and Indian Express, they are both relevant to the examination। ठीक है, they are both relevant to like all their news, particularly I would say rather editorials, है ना, editorials जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा important होते हैं। तो editorials का तो both Indian and Hindu you will find Express both, right, they are both equally comparable। अब कुछ सेक्शंस ऐसे होंगे जो एक न्यूज़पेपर में ज़्यादा बेटर होंगे, कुछ सेक्शंस होंगे जो किसी और न्यूज़पेपर में ज़्यादा, जैसे आई फाइंड कि इंटरनेशनल रिलेशंस के एडिटोरियल्स या आर्टिकल्स विल फाइंड इंडियन एक्सप्रेस में कंपैरेटिवली बेटर होंगे। नॉट लाइक वी कैन दो कांट कंपेयर एग्जैक्टली, जैसे सी राजा मोहन है ना, तो इंटरनेशनल रिलेशन। बट ओवर हियर इन हिंदू यू विल फाइंड कि डिवर्स टॉपिक पे कुछ अच्छा आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे आपको। यू विल फाइंड द एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, तो ये क्या होगा, कंपेरेटिवली बेटर एक्सप्लेन होगा ओवर इन दी हिंदू। ठीक है, जो इंडियन एक्सप्रेस में कंपैरेटिवली व्हाट आई फाइंड कि वो उतना इलैबोरेटिव वे में नहीं दिया होगा, बट इवन दैट डेप्थ इज आई फाइंड rather enough। ठीक है, so relevance to the examination, they both are equally, but subject wise equally some kind of divergent rather observed। then time taken to read, that is the most crucial। मतलब ये confusion होता ही क्यों है, I believe the most reason is time taken, because Hindu newspaper it takes almost like for many 2.5 hours as well, इतना भी time कभी कभी लेता है, that is what I have seen। Indian Express in comparison 1.5 hour या some around 2 hours, right। so time taking
कंसिडरेशन इज इक्वली. अब नाउ यू नो व्हाट आई यूजुअली सजेस्ट कि अगर मतलब आपका बहुत ज़्यादा टाइम का कंसिडरेशन नहीं है एंड इफ यू हैव टू अटेम्प्ट इन द नेक्स्ट ईयर और टू, so then you can follow the Hindu newspaper. थोड़ा सा टाइम टेकिंग है तो बट आपको थोड़ा सा इलेबोरेटिव भी होगा. बट इंडियन एक्सप्रेस कम टाइम में यू विल फाइंड रादर द बेटर गुड कंटेंट एज वेल. सो time consideration that is equally matters a lot, right? See, I'm telling you the both sides of both the newspaper, so accordingly आप देख लो. Ease of reading and understanding. Now the thing is, the most important is whatever time it is taking, the most important is वो कितना understand हो रहा है ना, the ease of that understanding. And I find on this both the scale both are equally good. But फॉर द केस ऑफ हिंदू है ना, हिंदू के लिए ना वोकैबुलरी ये थोड़ी सी हाई वोकैबुलरी चाहिए. सो इफ यू आर रेडी टू टेक एफर्ट्स है ना, इफ यू आर रेडी टू टेक एफर्ट्स और इफ योर कमांड ओवर लैंग्वेज इज गुड, you will find you can absolutely follow the Hindu newspaper. But if you find कि उतना टाइम वोकैबुलरी मेरी स्ट्रांग नहीं है, उतना टाइम मैं दे भी नहीं पा रहा हूँ टू अगेन फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट, तब तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा दैट यू शुड गो विद द एक्सप्रेस या द इंडियन एक्सप्रेस. सो बोथ आर हैविंग गुड कंटेंट एब्सोल्युटली. देन नोट्स मेकिंग फिजिबिलिटी एंड कंफर्ट. The thing is कि न्यूज़पेपर से हम ये भी मानते हैं कि notes are supposed to be prepared because that is on day basis. So if you do have that clarity, which newspaper is rather helping you to make notes prepared in a better manner, that is what you should go with. अब यहाँ पे तो ये subjective matter है, highly subjective matter है कि how much you are comfortable from that particular explanation to draw your required notes. Okay, so that is equally. And then अगेन एक फैक्टर है यहाँ पे जो अफोर्डेबिलिटी का वर्क करता है. सो अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू द हिंदू जैसे यू विल फाइंड के कंपेरेटिवली कॉस्टली, बट इसका ऑनलाइन वर्जन आई वुड से कि ये कंपेरेटिवली चीपर है ना. तो ऑनलाइन यू कैन हैव शेयरिंग एज वेल फॉर दिस न्यूज़पेपर. अगर इफ यू आर मच कंफर्टेबल विद द सेम न्यूज़पेपर, यू कैन हैव शेयरिंग इवन विद द ऑनलाइन मोड. ऑनलाइन में तो नंबर ऑफ ले सकते हो या ऑफलाइन भी अगर हो तो you can with your roommates as well. And individually basis पे even the Indian Express you will find is rather cost effective, 5 to 6 rupees per day, that is what it costs for. So I believe के उस केस में Indian Express rather is superior. So in the conclusion, what I think, now the choice of this newspaper, it should depend on this many factors. Okay? Or the kind of comfort do you have, the kind of note making ability that you derive from, the vocabulary or the comfort of understanding, ease of understanding. Then you will find time, how much it is taking. So it depends on कि आपके पास time कितना available accordingly. And the most important and crucial factor, that is the relevance, that how you find. और मैं relevance इसको subject wise domain में divide करता हूँ, तो accordingly you can choose your newspaper. ठीक है. So मैं अगर बोलूँगा अगर आपके पास time ज़्यादा है, years के attempts ज़्यादा है आपके पास, तो you shall absolutely go with the हिंदू न्यूज़पेपर. हाँ, बट अगर आपको टाइम इफेक्टिव भी है और आपको नहीं देना है बहुत ज़्यादा टाइम है ना, और क्विक टाइम में सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, इन दी दैट एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस इज रैदर वेरी गुड न्यूज़पेपर. सो इट्स अप टू यू नाउ, you shall take the final call. So I wish you thank you for watching it till the end. If you like it, share it with your near and dear one. Thank you.